Kashif Mahmood, ELC Sialkot, Pakistan. Do you know the spark, the beginning, or not? Behind your FA or BA, do you have the spark? Behind your FA, BA or MA or MPhil, do you have the spark? What is that why? When you have why inside, and what do you mean by why? Do you have the why that wakes you up? क्या आपके पास वो why है जो आपको फेसबुक की तरफ नहीं जाने देता है? क्या आपके पास वो why है जो किसी से बात नहीं करने देता है? उस माँ को नींद आ सकती है जब तक उसका बच्चा उसके पास ना आए? क्या आपके चैलेंजेस आपको सोने देते हैं? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, you think that you are getting success? Why are you using internet? To get entertained? There is no particular entertainment in students' life. You need to work hard and hard and hard. कि मैं कैसे डॉक्टर हूँ जिसका मुआशरे को कोई फायदा नहीं है? मैं क्या बनाऊँ? मैंने 2 महीने 3 महीने ELC में कोर्स किया, मैं बंद क्या रहा हूँ? मुझे आ क्या रहा है? मैं FA BA कर चुका हूँ, मुझे आ क्या रहा है? मैं बंद क्या रहा हूँ? क्या मुझे आग में डाल के कुंदन बनाया जा रहा है? यार तू 4 साल को इतलाए ने तू बनाया कि वो और बात है, तू की बना। मैंने MPhil कर लिया है, मैंने एक पर्सनालिटी बनाई है, वो बोलती है। खसमानु खाए डिग्री मेरी, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ जाया हो गया। वो कागज गया तो मैं भी गया। 2-2 4-4 साल हो गए आपको अंग्रेजी सीखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज में। आइए अंग्रेजी। Sir Kashif, please come on the stage and conclude today's presentation. Big hands for Professor Kashif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खिड़कियाँ एक दो खोल दें ताकि थोड़ी देर हम और ज़िंदा रह लें। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन द बिगिनिंग, extremely happy to be here, to be the part of ELC Pasrur campus. And you're looking so nice, wearing new clothes. And I could see that there are so many modern people living in Pasrur, mashallah. And Bulwan ji, it's so good. कैसा लगा आज आपको? It's the first presentation of Pasrur campus here in Pasrur. How did you find it? कैसा लगा आपको? That's good. Did you learn something? कुछ सीखा आपने? Did you improve something? कुछ इस तरह का आप पहले भी अपने स्कूल या कॉलेजेस में करते रहे हैं? Why no? मौका तो ये है ना कि कुछ हो रहा हो तो हमें मौका नहीं मिलता। ऐसा होता ही नहीं है तो फिर मौका नहीं मिलता ना। पहले तो ऐसा हो तो फिर मौका हो। आप लोगों को चाहिए ये सारे मामलात अपने स्कूल और कॉलेज की मैनेजमेंट को बताएं कि इससे ही इंसान आगे बढ़ता है। बिकॉज इफ़ यू हैव एवरीथिंग, गुड क्वालिफिकेशन, good education, and you do not have the confidence, you're dumb and deaf in the international market, even in your local market. You must know the importance of education, importance of confidence, importance of communication skills. सारे लोग देखें कि ये टिश्यू का डिब्बा जो है वो पीछे से आ रहा है और ये पहुंच चुका है। Anybody? ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों होती हैं? आज इंशाल्लाह हम बहुत सी बातें करेंगे भी, सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। डिस्ट्रैक्शंस हम तब महसूस करते हैं कि जब हम फोकस्ड नहीं होते हैं। देखें ना, अभी इधर से आवाज़ आई है, मुझे भी आई है लेकिन मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मेरी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, खिड़की की आवाज़ को सुनना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जब हम अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाहु अकबर,
तो फिर जिधर जिधर से आवाज़ें आ रही होती हैं बंदे का ध्यान भी उस तरफ जा रहा होता है, जिधर जिधर हारिश हो रही होती है इधर उधर आपके हाथ जा रहे होते हैं, मोबाइल बज रहा होता है, मक्खी बैठ रही होती है। तो फिर आप अंदाज़ा करें हाउ मच फोकस यू आर। हम अपनी ज़िंदगी में तो फोकस्ड है ही नहीं है। हमें कोई इधर से करे तो हाँ जी की गल है, कोई इधर से करे हाँ जी की गल है। आपका अपना कोई विजन नहीं, आपकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं, आप किसी चीज़ को फोकस करके नहीं बैठे हुए हैं। जैसे ये साहब देखिए ना, नबील भाई मूवी बना रहे हैं। अब ये अगर जिधर ये फोकस करके मूवी बना रहे हैं उस तरफ ये ध्यान ना रखेंगे तो मूवी बनेगी। अगर ये इस तरह बना रहे होंगे माशाल्लाह, देखा पर्पस उनका था एक लेंस को फोकस करना, लेकिन वो इधर उधर चातियाँ मार रहे हैं तो इसका मतलब है मूवी अच्छी नहीं बनेगी। अभी टिश्यू पेपर का डिब्बा वहाँ से यहाँ तक आया और तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। जैसे कि आपको पता था कि उसका जनाजा आना है तो हमने देखना है। अपनी ज़िंदगियों में फोकस लेकर आइए। That you are here for a purpose. I hope that you have learned something. कुछ सीखा होगा आपने कि जब हम जाते हैं कहीं पे भी कुछ भी करते हैं तो एक चीज़ मरकज़ होती। Can you see clearly? How many things can you see at the moment? अभी आपको कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं? Can you see everything at a time? बोलिए क्यों? तो इसी तरह ज़हन में रखिए, we cannot see everything at a time. एक वक्त में हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं। When we can see everything at a time, but we cannot focus everything at a time. हमारे जो इन आँखों के लेंस हैं वो उस चीज़ को फोकस करते हैं जिसमें आपका दिमाग कहता है। And learn to focus life. इसी तरह अपनी ज़िंदगी के जो लेंसेज हैं लाइफ की तरफ जो जाने वाले होते हैं उनको फोकस कीजिए। सब लोग आ चुके हैं? मिस्टर आसिफ, मिस्टर उस्मान, देखिए क्या कर रहे हो। गर्मी है लेकिन फिर भी हमने ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। कभी भी अपनी ज़िंदगी में मर गए का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। देयर आर डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ बट वी नीड टू कॉम्बैट, COMBAT, उनसे लड़ना सीखना। मर गए नहीं करना, ओके। जब पंखे या बिजली दुनिया में नहीं भी थी तब भी लोग जीते थे। और अगर गर्मी है या सर्दी है, नो प्रॉब्लम, वी नीड टू लिव, ओके। हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन? डिड यू एंजॉय दिस? दैट्स गुड। कोई मशवरा देना चाहें हमें, हम इसको पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अगर आर्टिकलों के साथ साथ वीडियो भी दिखाई जाए तो वो उसके साथ हम ज़्यादा सीख सकते हैं। जैसे टीचर की बात, वीडियो मूवी इंग्लिश में कब की बात कर, कब दिखाई जाए? कोई दिखाई जाए साथ में वो बेटा कब? अच्छा, जब आप सर पढ़ा रहे होते हैं तो वो तो इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं ना आपको, तो इंग्लिश में कोई मूवी भी दिखाई जाए सर उससे पता। अच्छा, उसका भी इंतज़ाम करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे आज मैं कुछ मूवीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ मोटिवेशनल, वो भी हम देखेंगे, और आप कुछ वीडियोस का भी अरेंज करते हैं इंशाल्लाह। हम इतने लैंडलॉर्ड नहीं हैं, माड़े मोटे से मज़दूर तबका से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन हमारा विज़न बहुत बड़ा है। अब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें रिसोर्सेज दे और एक बहुत से भी बेहतरीन कैंपस आपको पसरूर में दे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मिशन ऊंचा है लेकिन हम पीछे से लैंडलॉर्ड नहीं हैं, लंबड़दार भी नहीं हैं। वी आर पुअर पीपल। लेकिन हमारी जितना भी अल्लाह ने अता किया है हमने वो लगाया है। इसमें मिस्टर उस्मान जो आपके डायरेक्टर हैं पसरूर कैंपस के, इनकी मेहनत है, कोशिश है, comes from all the way from Sialkot, Delhi, and then he leaves this campus and goes to Daska campus, and then he goes to Sialkot, and it's his daily job. You know how difficult it is to get up in the morning and go to another town and teach there for some time in such a hot season. Even in Ramadan you might have seen him working hard day and night. तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो डायरेक्टर हैं पसरूर कैंपस के मिस्टर उस्मान, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। The real ELC or the real house of ELC in Sialkot, and the father of ELC, the chief executive of ELC English Language Club, Mr. Asif Mahmood. I would like to invite him. He's not here, he's left. चले गए?
ओके, चले उनकी गैर मौजूदगी में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. We also have one of the directors, in the new intake in our team, another director, Mr. Munir, one of the directors from Sialkot campus. हम उनका भी वेलकम करते हैं. Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! And we have the director, Mr. Umar Tur. माशाल्लाह दोनों भाई हैं, really working hard day and night. आप इनकी हार्ड वर्क को देख सकते हैं कि दोनों भाई शहर से आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं. और इनके साथ इसके सेंटर मैनेजर मिस्टर मुस्तफ़ा, उनको मैं दावत दूंगा कि वो भी इनके साथ सफ़र में मौजूद हैं. उग्गो की कैंपस से हमारे डायरेक्टर KCGS और ELC की ब्रांच के मिस्टर हैदर सपरा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनको दावत दूंगा. और इसके बाद हमारे डस्का कैंपस के डायरेक्टर मिस्टर उमर मुनव्वर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं दावत दूंगा कि स्टेज पर आएं. आपको बताता चलूँ कि वो कहते हैं ना, जिस्म में सबसे ताकतवर चीज़ रीढ़ की हड्डी होती है. तो मैं ये कहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है, उसमें काफ़ी जोड़ लगे होते हैं. तो वो जोड़ बन के तो पूरी एक हड्डी बनती है. और एक दो जोड़ रह गया है, अगर वो सारे जोड़ मिला लें तो हम एक रीढ़ की हड्डी की मानंद. हम अपनी तारीफ़ तो नहीं करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वाकई ये ज़िम्मेदारी इस पूरी रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं जो आपके सामने हैं वो मौजूद हैं, और इनके अंदर जो हराम मगज़ है वो हमारा ईमान है. आई अप्रिशिएशन मिस्टर उस्मान को, क्योंकि वो हेड हैं, मिस्टर उमर को जो कि हेड हैं पसरूर कैंपस के. और हमें आपको नहीं भूलना चाहिए, आप हैं तो आज हम हैं. अगर आप नहीं होते तो हम इधर कलम कल्ले आके चाय पी के चले जाते. ठीक है, इसलिए आप लोगों का भी शुक्रिया. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि किसी खूबसूरत गिफ्ट को किसी गिफ्ट रैपर में पैक किया जाता है, डिब्बे में पैक किया जाता है, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है. इसलिए मैं कतई तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हम अपनी मीडिया टीम के बगैर मुकम्मल, क्योंकि ये हमारे आँखों का सेहरा हैं. ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारे भाई हैं मिस्टर नवीद भट्ट और मिस्टर नबील भट्ट और मिस्टर जैन, और इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये भी हमारी टीम का हिस्सा हैं. मैं इनको भी दावत दूंगा कि वो भी स्टेज पर आएँ. आ जाइए, आ जाए मिस्टर जैन, आप भी आ जाए. हमारे मामू जान भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मिस्टर उमर और मिस्टर उस्मान के. मैं उनको भी दावत दूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाइए. अल्लाह हाफ़िज़. और ये हाफ टीम ELC स्कूल की, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आपके सामने मौजूद है. और हम आपके खादिम हैं, कतई तौर पर कोई बॉसेस वाली कैफियत हम लोगों में नहीं है. वी आर एट योर डिस्पोजल, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू गाइड यू, एंड वी आर हियर टू डाई फॉर यू एज वेल. Wish you best of luck in all walks of your life. We pray that you get success in every walk, day by day, 1 minute after the other, and gradually you get success and your parents become happy with you, and you are going to have their life, peaceful life, inshallah. Thank you very much. In सब लोगों को सलाम, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे. Thank you very much. Music आपके लिए होना चाहिए था, लेकिन पहुँचिए. Thank you very much indeed. उनको काम दी गल कर ली. All right. I want you to have your notes ready, pens and pencils and your notepads. The thing, if you think that is efficacious or effective for you, you can write. Because when you write, you learn more. We have the landlord of this building. We welcome her as well. We thank you very much for coming here and joining us, being the part of this function. Thank you very much. All right, need your attention, please. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو تحب الكريم فاعف عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا. Ladies and gentlemen, respected teachers, honorable guests, and respected students, cameramen, the management department and all other, especially the landlord that is here, we welcome you all here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honestly speaking, extremely happy, क्योंकि हर बंदा अपने घर में शेर होता है और वही शेर जब घर से बाहर निकलता है तो वो गीदड़ होता है, और हम यही कोशिश करते हैं कि हम घर में अगर शेर हैं तो बाहर भी शेर हों, और वो तभी पता चलता है कि जब हम वालिदैन से हट के हम ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं, कि हम घर से बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं और अल्लाह हमें एतमाद हमारा बहाल रखता है और दिन ब दिन इनमें अल्लाह ताला तरक्की अता करता है. The purpose of ELC English language, primarily the opening or the introduction of ELC is to teach English language. But honestly speaking, ladies and gentlemen, if you are a teacher or not a teacher, for example, this is the duty of every true Muslim to preach. Now we have misconception in our life that to teach or educate is the only duty of the teachers of ulama karams. We are mistaken. Aisa nahi hai. So wherever you go, you need to teach. Wherever you go, you need to learn. And that is why we are teaching and preaching simultaneously in English Language Club. And this is only because of the blessings of Almighty Allah. We train ourselves, we teach ourselves, and we guide you as well. I haven't been told the topic to speak on, because it was decided within a day or two to have your presentations, as we had a busy week recently, so we couldn't manage it. And in such a hot season, it's really difficult to manage these things. You know, you've been sitting here since morning, so wet, sweaty as well, you know, wearing new suits. You can put your suit there. We thank you very much indeed. But I have had a very beautiful topic for you. Okay, inshallah you will enjoy and you will learn more. Even I will learn more, inshallah. Ladies and gentlemen, I have recited the ayah of the Holy Quran, in which Allah says, "Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." In Allah Taala ने इंसान जिंदगी और मौत दोनों को पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाया जा सके कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है और बुरे काम करता है. That is the only purpose of our living. There is no other purpose. We are here to obey Almighty Allah. अल्लाह की तालीमात को obey करने के लिए यहाँ पर. अब आइए देखते हैं ऐसा है कि नहीं है. Whatever you are at the moment, मैं अभी लंबी चौड़ी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा. If I say your qualification, or you are doing FA, you're doing BA, you're doing MA, you're doing बोलते जाइए, you're doing FSC, you're doing DA, you're doing DA, you're doing FSC, you're doing FSC, you're studying in matriculation, you're studying in FSC, you're studying बोलते जाइए, MPhil, you're doing FSC, you're doing whatever you're doing. Whatever you are doing, you listening to me? Whatever you're doing, let me know, why are you doing? We are going to figure out the intuition. I'm sorry. We are going to figure out the spark
inside. Spark क्या होता है? Spark, शोला. वो शोला क्या करता है? You know, if you want to lit anything, for example, आप क्या करते हैं? You spark. उसको जलाने के लिए एक शोला निकलता है, और उस शोले के बाद उस तीले को आग लगती, और फिर वही तीला पूरे जंगल में आग फैलाता है. इनिशिएटिव क्या था? That spark. Now whatever you're doing, FA, BA, MA, CA, DA, TA, etc., do you know the spark, the beginning, or not? If you do not know the spark, now let us figure out the spark. Then why are you doing this? Have you ever asked yourself? कभी अपने आप को पूछा आपने? Why am I doing this? What is the reason behind it? इसके पीछे reason क्या है? And if you have known it, for example, you have known everything. If you get the answer, you have got everything. जब आपको इस चीज का पता चल जाता है, तो फिर आपको सब सारी चीजों का पता चल जाता है. Kashif Mahmood, ELC Sialkot, Pakistan. Do you know the spark, the beginning, or not? Behind your FA or BA, do you have the spark? Behind your FA, BA or MA or MPhil, do you have the spark? What is that why? When you have why inside, and what do you mean by why? Do you have the why that wakes you up? क्या आपके पास वो why है जो आपको Facebook की तरफ नहीं जाने देता है? क्या आपके पास वो why है जो किसी से बात नहीं करने देता है? उस माँ को नींद आ सकती है जब तक उसका बच्चा उसके पास ना आए? क्या आपके चैलेंजेस आपको सोने देते हैं? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, you think that you are getting success? Why are you using internet? To get entertained? There is no particular entertainment in students' life. You need to work hard and hard and hard. कि मैं कैसे डॉक्टर हूँ जिसका मुआशरे को कोई फायदा नहीं है? मैं क्या बनाऊँ? मैंने 2 महीने 3 महीने ELC में कोर्स किया, मैं बन क्या रहा हूँ? मुझे आ क्या रहा है? मैं FA BA कर चुका हूँ, मुझे आ क्या रहा है? मैं बन क्या रहा हूँ? क्या मुझे आग में डाल के कुंदन बनाया जा रहा है? यार तू 4 साल को इतलाए ने तू बनाया कि वो और बात है, तू की बना. मैंने MPhil कर लिया है, मैंने एक पर्सनालिटी बनाई है, वो बोलती है. खसमानु खाए डिग्री मेरी, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ ज़ाया हो गया. वो कागज गया तो मैं भी गया. 2-2 4-4 साल हो गए आपको अंग्रेजी सीखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज में. आइए अंग्रेजी. Behind your why, behind the spark inside, you have some challenges. You have some goals. Let me ask you the same question. Behind your FA or BA, do you have the spark? अरे पहले वाले भी बंद हो गए. बोलिए. Behind your FA, BA or MA or MPhil, do you have the spark? Do you have some goals and challenges? What is that why? When you have why inside, and what do you mean by why? Come on. What do you mean by why? Spark. What do you mean by spark? I must say, आग का शोला जो कि आपके दिमाग की आग को बुझने नहीं देता. Let me know your spark. Does it buck you up? क्या ये आपको सताता है? क्या ये आपको घुंसे मारता है? बोलिए.
क्या ये आपको झंझोड़ता है? क्या ये आपके दिमाग में शैतान की तरह समाया हुआ है, चढ़ा हुआ है? बोलिए। कभी उस लड़की को या लड़के को देखा है जिसकी कल बरात हुंदी है? क्या कैफियत होती है उसकी? और रोटी नहीं खानी, वो मेरी बरात है। और तू उथे नहीं गया, वो मेरी बरात है। बोलते चाहिए क्या हालत उसकी उसकी। तू कपड़े किड़े ने पाए देना, मैं तेरी भी करनी। उसके होशो हवास में क्या चीज चाहिए होती है? मेरा ब्याह है, मेरा ब्याह है, मेरा ब्याह है। या उस मां से पूछिए जिसका बच्चा गुम हुआ होता है, नहीं तू रोटी नहीं खाती, तो क्या कहेगी? मेरा बच्चा। उसको आप में भी उसका बच्चा नजर आएगा, क्योंकि उसके बच्चा गुम होने की जो कैफियत उसके अंदर आ चुकी है, जो उसको आग लग चुकी है, जो शोला पैदा हो चुका है, उसने सारी चीजों को बुला दिया। मैं यही स्पार्क आपके अंदर पैदा करने आया हूं। डू यू हैव द वाई दैट वेक्स यू अप? क्या आपके पास वो वाई है जो आपको सोने नहीं देता है? बोलते जाइए। आपके पास वो वाई है जो आपको खाना नहीं खाने देता है? क्या आपके पास वो वाई है जो आपको रेस्ट नहीं करने देता है? क्या आपके पास वो वाई है जो आपको फेसबुक की तरफ नहीं जाने देता है? क्या आपके पास वो वाई है जो किसी से बात नहीं करने देता है? तो क्या है फिर आपके पास? बोलिए। कौन से गोल्स और चैलेंजेस लेकर आप मार्केट में आए हुए? आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई डोंट माइंड। मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक ही होगा, लेकिन शो मी द स्पार्क इनसाइड। कम ऑन, आई हैव द स्पार्क टू कॉन्कर द वर्ल्ड। मुझे मेरा स्पार्क मुझे सोने नहीं देता है, मुझे रुकने नहीं देता है। उस मां को नींद आ सकती है जब तक उसका बच्चा उसके पास ना आए? बोलिए। आपको नींद कैसे आती है? आप में कौन से वो चैलेंजेस और गोल्स छुपे हुए हैं जो कि इतनी नुस्ती डालते हैं आपको? बोलिए। उस मां के तो बाल बिखरे होते हैं, कपड़े बिखरे होते हैं। किसी मजनून को देखा है जिंदगी में? क्या हालत होती है उसकी? ना उसे खाने का पता है, ना उसको पीने का पता है, ना उसको पहनने का पता है, ना उसको चलने का पता है। एक मूवी मैंने तो देखी नहीं, किसी ने मुझे उसकी मिसाल दी है। हीरांचा मूवी थी या इस तरह की कोई मूवी थी कि एक बंदा उधर नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके आगे से रांझा गुजर जाता है। इस तरह का कोई कैरेक्टर है, लाला मजनू गुजर जाता है। तो वो बंदा नमाज पढ़ के उस मजनू को कहता है कि तू तनु नहीं पता लगता पे नमाज पे पढ़ना, तू मेरे अगों लंघ गया में। तो मजनू का जवाब क्या था कि मनु तो यह भी नहीं पता कि तू नमाज पे पढ़ना मैं तो अपनी लैला लभदा गुम हाँ। ते तेरी किहो जी नमाज है कि तेन यह नहीं पता पे लगता कि तू नमाज पे पढ़ना, तेन पता लग गया कि मैं अगों लंघ गया। कि तुम्हारा फोकस उस मजनू का फोकस क्या था? लैला लैला, कि उसको नहीं पता चला। हमारी नमाज का आलम क्या है कि हम अपनी नमाज में हम अपनी लैला नहीं ढूंढ रहे। हमने अपना राब्ता अल्लाह के साथ जोड़ा है, उसने जोड़ लिया, तो उसको नहीं पता चला आगे पीछे क्या हुआ। आप बताइए अपने बारे में, क्या आपके चैलेंजेस आपको सोने देते हैं? देखिए, घोड़े को कभी देखा आपने? घोड़े के उन्होंने गॉगल्स पहनाए होते हैं इस तरह के करके, लेदर गॉगल्स। किस लिए पहनाए जाते हैं? उसको नजर नहीं आता है। इस तरह अक्सर आपने देखा होगा। हाँ जी, क्यों पहने होते हैं लेदर गॉगल्स? ताकि साइड से जो उसको खतरात हैं उसकी तरफ उसका ध्यान ना जाए, तो उसका टांगा खराब ना हो। आपने तो घोड़े को फोकस कर लिया, गधे और खोते को फोकस कर लिया, इंसान को फोकस ना कर सके। किस इंसान को? ये जो इधर बैठा हुआ है, ये जो इधर बैठा हुआ है, ये जो इधर बैठा हुआ है। फोकस होना इतना जरूरी है कि गधे खोते हम तो उससे भी गए गुजरे, उसको लगामें डाली हुई हैं उसने।
हमारी लगामें किधर है? ये दिस माइंड कंट्रोल्स योर, डजंट इट? इट कंट्रोल्स योर माइंड, body, and behind this there are challenges and goals. अब घर जाके सोचिए, whether you're doing FA, BA, MA, PhD, etc. कौन सी ऐसी ताकत है जो कि आपको ऐसे घुमा रही है? कौन सा ऐसा मैग्नेटिज्म है कि जो लोहे को अपनी तरफ खींच रहा? क्या आपकी जिंदगी फोकस्ड है? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, यू थिंक दैट यू आर गेटिंग सक्सेस? सोचेंगे जाके? आगे चलिए. These two things are extremely important for you. And if you think that you do not have these two things, go home and scratch the things you have already done. जो पहले आपने सारी चीजें की हैं उसको रब करो. Put a new thing on it. इसके ऊपर नई चीज चढ़ाओ और फिर निकलो दुनिया में एक नए विजन के साथ, सोच के साथ, जज्बे के साथ, स्पार्क के साथ. जब ये सारा कुछ आप कर लो, फिर क्या करना है आपने? यू नीड टू डिसिप्लिन योर माइंड. ये मुझे कैमरा दीजिएगा जरा, फोटो वाला. आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ फोटोग्राफ. मैंने डिसाइड कर लिया फोटो लेनी है. अब ये मेरा दिमाग है. अब मैंने इस दिमाग को ट्यून करना है. ये देखिए, लुक एट दैट. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. देखिए, भाई को आपने फोटो खींचते हुए नहीं देखा है. जब भी कोई नया बंदा आता है, क्या ये लेंस ट्यून नहीं करते? के साथ दिखी चीज आने डिशिन 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 ऐसे गोलियां में मार देने, डिशकियां 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 डिशकियां. इस तरह होता है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर चैलेंजेस एंड डिजायर्स एंड गोल्स, यू ट्यून योर माइंड. आप उसको फिर एडजस्ट करके करते हैं. करेक्ट. आपके गोल चेंज हो गए तो इसको ट्यून कर लेना. करेक्ट. कैसी प्यारी फोटो आएगी. और जिसका लेंस ठीक नहीं है, चाहे उसके पीछे जितनी खूबसूरत मशीनरी है, आपकी फोटोग्राफ अच्छी नहीं आ सकती. पहला स्टेप क्या था आपका? स्पार्क. चैलेंजेस आ गए, अब वो भड़क उठा है. अब जब वो भड़क उठाए शोला, तो शोले को कंट्रोल नहीं करना है. पहले तो लोगों के पास शोला ही नहीं है ना, और फुसे फुसे चल रहे होंगे, जिधर वो चलिए उधर ही निकल रहा है जी. क्योंकि जिसकी लगामें, आपकी लाइफ की लगामें आपके पास नहीं है, तो हवा जिधर की आप भी उधर के. और जिसकी लगामें इतनी डाढ़ी होती हैं, जितनी तेज हवा चले आप हिल नहीं सकते. क्योंकि आपके जिस्म को किसने कंट्रोल किया होता है? आपके दिमाग ने. और उसके पीछे एक सोच होती. ये सोच है जो इंसान को खड़ा करती. ये सोच है जो ताकतवर इंसान को खोखला कर देती. कहते ना, तैनूं ते तेरियां यादां ने तबाह करके रख छोड़िया. खांदा पींदा ते 5 टाइम दा सी. Now, whatever your challenges are, you need to discipline your mind, you need to train your mind, you need to tame your mind. Tame करना क्या होता है? सुधाना. अपने दिमाग को ट्रेन करना, समझाना, मोल्ड करना, फोकस करना. कर लेंगे आप? फिर क्या करना आपने? आफ्टर दैट यू नीड टू सी which photograph I want to take. This one first, this one first, this one first, or after some other. उसके बाद आप क्या करेंगे? अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करेंगे कि सबसे पहले मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन द टेबल. आपने इनको अरे नहीं किया कि ये करना है पहले काम, ये करना है, ये करना. आप तो निकल पड़े. बात ठीक है जी, निकलिए. इसकी मिसाल मैं शॉपिंग से देता हूं. आपने पता है कि बाजार आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप प्रॉपर एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं. और जो शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाता, वो फिर बाजार जाके सोचता है कि मैं की लाना सी ए दुकान. थोड़ा सा आगे जाता है, दूसरी चीज़, फिर याद आता है, ओहो तीसरी चीज़ तो मैं उसी दुकान से लेनी थी. तो फिर वो मार्केट में क्या होता है? खज्जल. आपको नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी में खज्जल हो रहे हैं? वजह क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर सके, शेड्यूल नहीं कर सके. इससे भी पीछे जाएं
तो वो माइंड का डिसिप्लिन था। उसके भी पीछे जाएं तो एक सोच थी। ये बड़ा एक बीज से ये सारी चीज़ें निकली हैं। जैसे एक बीज में, आम के बीज में पूरे का पूरा आम का दरख्त होता है ना, तो स्टेजेस होती हैं। तो ये मैं स्टेजेस बना के आपके लिए लाया हूँ। पहले सोच है, उस सोच को आपने लगामे देनी है, फिर आपने रास्ते तय करने हैं। Whatever you're doing FA BA में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप FA करें ना करें, BA करें, आप जो कुछ भी अभी आप कर रहे हैं ना, उसको जाके थोड़ा खिंचाई कर लो। इसको करने के बाद उसी चीज में फिर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। दाएं से पानी पिए। अब मैंने तय कर लिया ना, मैंने सुबह 5 बजे उठना है, नमाज पढ़नी है, फिर मैंने ये करना 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 है, कैरिंग मी और नॉट, फिर उस चीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू विल गेट डाउन। यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ। आपने अपनी जिंदगी को बैलेंस करना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कॉलेज जाने में कंसिस्टेंसी नहीं है, दे आर नॉट रेगुलर। कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन किया है, 4 दिन गए हैं, 2 दिन छुट्टी कर ली है। सुबह की सैर के लिए निकले हैं, 3 दिन सैर किए, फिर चौथे दिन थक गए। तो ऐसे तो नहीं होता। अब आपने अपने बूटों के तस्मे जो हैं वो अच्छी तरह से खींच के बांध लिए हैं, आप सफर के लिए निकल पड़े। विदाउट कंसिस्टेंसी आप रह जाओगे। देखिए जाके मार्केट में जो रेस लगती है, कभी देखिए रेस आपने, वो रुकता नहीं जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। कि रुक जाता है वो उसकी तरह, खरगोश की तरह। मैं जरा साल अल्लाह मिसालें आपके लिए। हमें कछुआ और खरगोश की कहानी क्यों पढ़ाई जाती है? जिंदगी में कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए। और 8-10 साल हो गए हमें वो कहानी पढ़ते हुए, हम अपने ऊपर लागू ही नहीं कर पाए। ना हमारे उस्ताद ने बताया कि क्यों पढ़नी है ये कहानी, उसने ये नहीं बताया कि रेस्ट क्यों नहीं करना है। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी पैदा कीजिए, फिर क्या होना है। लुक, ये सारा कुछ हो गया ना। ये होल डे डिपेंड्स ऑन योर व्हाई। अब आपका पूरा दिन वो स्पार्क के गिर्द घूम रहा है, जिस तरफ वो शोला आप उस तरफ। अब मैंने सारा डिजाइन कर लिया ना, लेकिन अब मेरी जो पूरा दिन है उसी पे बेस करता है ना, कि मैं वो सारा कुछ डिजाइन करके तो मैं थे कुर्सी पे बैठ जावा, मुझे वही आएगी, मनो सलवा उतरेगा, रोटी पेश की जाएगी, मेरा मुंडा डॉक्टर पे बंद है। नहीं, सारी चीजें प्रायोरिटाइज हो गई हैं। अब अगली मैं जो भी बात करूंगा उसके आप आगे क्या लिखेंगे? बोलिए, कैस कीजिए। ईट, थैंक यू वेरी मच। ईट वाई, वर्क वाई। इन दो की पहले बात कर लेते। मैं क्यों खाऊं? बोलते जाइए। भाई गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, चलने के लिए मैंने खाना है, मैंने अल्लाह की इबादत करनी है, कहा गया है कि खाली पेट इबादत ना किया करो, इसलिए मैंने खाना है। जवाब आ गया? कितना खाना है? जवाब आ गया। कब खाना है? क्या खाना है? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? किसी ने बताया ही नहीं है। क्या आप अपनी मोटर बाइक में क्या डालते हैं चलाने के लिए? पेट्रोल। अगर मैं कहूं कि मट्टी का तेल डाल लो, वो भी तो पेट्रोल होता है, तो क्यों नहीं डाला? मैदा नहीं, हराम। मैं कहूंगा अपनी पेट्रोल की जगह पानी डाल लो, गाड़ी चलेगी? गाड़ी का इंजन खराब होगा। क्या चीज खराब हुई? इंजन। किस वजह से? आपका पेट्रोल ठीक नहीं था, आपकी फूड सिलेक्शन ठीक नहीं थी, आपने टैंकी के बाहर पेट्रोल आना शुरू हो गया, आपने थोड़ा पेट्रोल डाला, आपने उसकी सफाई नहीं की। मीन्स फूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड। डू वी टेक केयर ऑफ इट? नो। हम सब फास्ट फूड खाते हैं, पेप्सी कोक के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उबला हुआ पानी हम नहीं पीते हैं, सब्जियां हम नहीं खाते हैं, फ्रूट हम नहीं खाते हैं, मिठाइयों पे हमारा ज़्यादा जोर है। बोलिए, आप तो एक स्पार्क लेके निकले हो मार्केट में, और तेरी खुराक क्या है? खुराक तेरी
फास्ट फूड वो चूचा आप खाते हैं जो खुद खड़ा नहीं हो सकता। बोलिए, शाहीन क्या खाता है? शाहीन कभी यह मुंडा बड़ा लायक है यार, शाहीन मुर्दार नहीं खाता, ताजा। और आप बासी फ्रोजन फूड, थूके तो नहीं आ रही मेरे मुंह से, फ्रोजन फूड नहीं आ रही। क्या खाते हैं? वड्डी ईद का गोश्त, अभी अगली वड्डी ईद आ जाती है, मां जी गोश्त नहीं मुकदा। वो कहता है हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वो कबूतर लालड़ियां नहीं खांदा, शेर छोटे छोटे मोटे मोटे डबल रोटी ब्रेड शेर नहीं खांदा। ताजा खून पीता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पार्क है उसने उसको ऐसे चिंगाड़ता है। उस उठ के बज़्म जहां में क्या है, क्या शेर बोला था? नए दौर का आगाज है, तेरे दौर का आगाज है। और ही अंधा किसको कह रहा है? उठ। इकबाल किसको कह रहा है? वो मुझे कह रहा है और आपको कह रहा है। तो आप उसको क्या कहते हैं? अच्छा ठहर जो 5 मिनट और, जरा उठ, जरा 10 मिनट और ठहर जो, जरा 1 मिनट बस मां जी, बस 1 मिनट। कहता नहीं है? वो कैसा स्पार्क है जो आपको उठने नहीं देता? वो फिटे मुंह है स्पार्क का। हमारा तो स्पार्क हमें सोने नहीं देता है। आपका कैसा स्पार्क है कि जो बुर्दा है? खोल आंख, जमी देख, फिजा देख। किसको कह रहा है वो? आपको कह रहा है। अच्छा वो देख उसे, अच्छा ठीक है। आप ये देखिए कि अंग्रेजों और काफिरों और ये जो यहूदियों ने आपको अपने आरे कितना लगाया हुआ है। कभी कोई ऐड फेसबुक की देखी है आपने टेलीविजन पे कि ये अच्छी होती है बुरी होती है? नहीं, उनकी ताकत ही इतनी ज्यादा है कि हर बंदे के हाथ में वो काका उठाया हुआ है। उन्होंने फोकस किया, उन्होंने फोकस किया ना। आपको आरे लगाया, आप लग गए। ये बेटा पकड़ना जरा, ये मैंने क्या किया? उसका पेन दे के आरे लगा दिया, तो मैं अपना काम करना शुरू कर देता। माएँ बच्चों को क्या करती हैं? टिकियां, टाफियां, लॉलीपॉप दे के उनको आरे लगाती हैं और फिर अपना काम करना शुरू कर देती हैं, ताकि बच्चा मुझे तंग ना करे। हम अमेरिका अफ्रीका को तंग नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने हमें लॉलीपॉप, टिकियां, टाफियां दे के हमें कहा है कि गुम रहो, मस्त रहो जिक्र फिक्रो सुबह गाही में, इसे मस्त रखो जिक्र फिक्रो सुबह गाही में इसे, और पुख्ता कर दो निजाम में हान काही में इसे, कि इसको खबर ही ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। इतना मस्त कर दिया हुआ है हमारे। लेकिन वो शायर क्या कहता है? निकल कर हान काहों में अदा कर रस्म शब्बीरी। रस्म शब्बीरी क्या थी? वो उठ मैदानों में आ तलवारा ना लड़। ए तस्बीहां ते हर बंदा पढ़ लेंदा। आइए, मैं काम करना है तो मैंने क्यों करना है? Why I work to get my goal। और उसके पीछे जो था वो आपका FABA जो भी था, कर जाके पूछिए ऐसा क्यों है। Why I study। क्यों पढ़ना है मैंने? क्योंकि मेरे चैलेंजेस हैं, मेरे गोल्स हैं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। अब फिर मैं कह रहा हूं कि आपके FABA के कोई गोल्स हैं कि नहीं है, मैं नहीं जानता, घर जाके बनाइए। यू नीड टू नो द रीजन वाई यू आर स्टडिंग, यू नीड टू नो द मार्क्स यू आर गेटिंग एंड वाई। You need to know why you are getting 800 or 900. If you do not know your why, you are nowhere in this market. Why are you playing? I play to balance my life. There are so many people who don't play. तो क्या शायर कहता है? All play and no games make Jack dull. हमारी जिंदगी में गेम्स कोई नहीं है। देखिए वो फिजिकल गेम सारी की सारी किस में चली गई हैं?
इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में चली गई हैं। किसने लगाई हैं? यहूदों की पॉलिसी थी और हमने उसको वेलकम किया। स्टापू का दौर खत्म हो गया, रस्सी टापने का दौर खत्म हो गया, चिड़ी छिक्का खेलने का दौर खत्म हो गया। क्या खेलेंगे? हमने तो अपने मुर्दा जिस्म को मजीद मुर्दा कर लिया है। आस्क योर सेल्फ वाई यू आर प्रेइंग। क्यों प्रे करते हो? बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी टू प्रे। मैं अल्लाह से मांगता हूं, मेरा रब है, वो मुझे देने वाला है। दैट इज वाई आई प्रे। आई एम टोल्ड टू प्रे। आई एम सेंट ऑन दिस अर्थ टू प्रे। दैट इज वाई आई प्रे। एंड वाई डू वी प्रे? वी प्रे टू कलेक्ट नेकी, पायटी, कट्ठे करी आओ, थैले भरी आओ। We pray to give love. We pray to get prosperity in this world. Ask yourself why you pray. Why you rest? Why do you rest? Tell me. क्यों रेस्ट करते हो? Excuse me? We should rest to refresh. But we rest to get delight. हम रेस्ट क्यों करते हैं? डिलाइट लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, गफलत की नींद में सोने के लिए हम रेस्ट करते हैं। और फिर सोते हैं तो जी करता है कि सोते ही जाएं। Kashif Mahmood, ELC Sialkot, Pakistan. Do you know the spark, the beginning, or not? Behind your FA or BA, do you have the spark? Behind your FA, BA or MA or MPhil, do you have the spark? What is that why? When you have why inside, and what do you mean by why? Do you have the why that wakes you up? क्या आपके पास वो वाई है जो आपको फेसबुक की तरफ नहीं जाने देता है? क्या आपके पास वो वाई है जो किसी से बात नहीं करने देता है? उस माँ को नींद आ सकती है जब तक उसका बच्चा उसके पास ना आए? क्या आपके चैलेंजेस आपको सोने देते हैं? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, यू थिंक दैट यू आर गेटिंग सक्सेस? Why are you using internet? To get entertained? There is no particular entertainment in students' life. You need to work hard and hard and hard. कि मैं कैसे डॉक्टर हूँ जिसका मुआशरे को कोई फायदा नहीं है? मैं क्या बनाऊँ? मैंने 2 महीने 3 महीने ELC में कोर्स किया, मैं बन क्या रहा हूँ? मुझे आ क्या रहा है? मैं FA BA कर चुका हूँ, मुझे आ क्या रहा है? मैं बन क्या रहा हूँ? क्या मुझे आग में डाल के कुंदन बनाया जा रहा है? यार तू 4 साल को इतलाए ने तू बनाया कि वो और बात है, तू की बना। मैंने MPhil कर लिया है, मैंने एक पर्सनालिटी बनाई है, वो बोलती है। खसमानु खाए डिग्री मेरी, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ ज़ाया हो गया। वो कागज गया तो मैं भी गया। 2-2 4-4 साल हो गए आपको अंग्रेजी सीखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज में। आइए अंग्रेजी। वो स्पार्क आपको सोने देता है। देयर इज नो रेस्ट इन इस्लामिक लाइफ। क्या हमारे दीन में किसी छुट्टी का कोई रिवाज है? बोलिए। ये कहा गया कि थोड़ी देर आराम कर लिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि रात के तीसरे हिस्से में उठ जाया करो, रात के 2 हिस्से जाग लिया करो, रेस्ट ज़रूर किया करो। रेस्ट इज़ लाजमी, वेरी कंपल्सरी। लेकिन क्यों? टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स, अपने टू रिजुविनेट, अपने आप को दोबारा ताकत प्रोवाइड करने के लिए। ये नहीं कि मैंने काम बस अब कर लिया, हूँ मैं रिटायर्ड लाइफ ज़िंदगी गुजारनी। देयर इज़ नो रिटायरमेंट इन मैंस लाइफ। इफ़ यू आर रिटायर्ड, यू आर टायर्ड। You need to ask yourself why you are watching television or using internet. घर जाके अपने आप से पूछिए, where is your why? Why are you watching television? Why are you using internet? To get entertained? There is no particular entertainment in students' life. Student की जिंदगी में कोई entertainment नहीं है इस तरह की।
यू नीड टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड। तेंदुलकर अगर टेलीविजन देखना शुरू कर दे, इंटरनेट यूज करना शुरू कर देता, तो आज नंबर 1 प्लेयर कैसे होता? बोलिए, हाशिम मामला क्यों होता? उनकी लाइफ में तो टीवी वगैरह नहीं है, वो तो सुबह उठते हैं तो फिर सारा दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस चलते रहते हैं। और हमारी जिंदगियों में क्या है? ये जिस टेली इडियट बॉक्स जिस घर में नहीं है, वो कहते हैं कि वो जाहिल लोग हैं, तुम्हारे घर में टेलीविजन नहीं है। इफ यू हैव टेलीविजन एट होम, व्हाट आर यू वॉचिंग? देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स टू वॉच। आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर यू गेटिंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट? यू नीड टू ट्रेवल। हम भी ट्रेवल करके आए हैं, एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। कोई मजा करने के लिए बाहर नहीं निकले हैं। देयर इज अ पर्पस। वी कम हियर टू डिलीवर, वी कम हियर टू लर्न, we come here to interact with you. You need to ask why you shop. There are so many people who shop for nothing. बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाँ शॉपिंग करते हैं, ऐਵੇਂ ही बस टाइम पास। ये हमारा पूरा दिन, मैंने इसको डिजाइन किया है, our whole day depends on my spark. ये मेरा स्पार्क तो मुझे शॉपिंग नहीं करने देता, ये मेरा स्पार्क तो मुझे ट्रैवल नहीं करने देता, ये मेरा स्पार्क मुझे खेलने नहीं देता, मुझे रेस्ट नहीं करने देता, काम 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 खाने नहीं देता। जिस बंदे ने ये मुल्क पाकिस्तान आपको बना के दिया था, क्या नाम था सोने का? एक कायद आजम होता है, एक कैद आजम होता है। कौन था वो? कायद आजम। जाती दफा क्या कह गया? काम काम काम। वो एने जो गया ऐसी बेचारा काम करने वाला, सेहत उसकी देखी थी तो क्या कह गया? काम काम काम। कितना अमल करते हो आप उससे? कोई एक बाजी या पायन मुंदा, उसके पीछे स्पार्क क्या था जो आपको भी दे के गया? स्पार्क काम काम काम। कितने भाईजान काम? बोलिए। वी आर सेविंग। व्हाई आर वी सेविंग? वी आर डूइंग एक्सरसाइज। Why are we doing exercise? अब हमने ये वाई ढूंढना है, ढूंढेंगे ये वाला वाई, और अपनी जिंदगियों को थोड़ा सा टाइट नहीं करेंगे, सबसे ताकतवर टाइट करेंगे आप उसको। थोड़ा टाइट नहीं करना, मुकम्मल टाइट करना। आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने अपने आप से पूछना है, What are you becoming? क्या पूछना है? ये सारा कुछ करने के बाद आप बोलिए बन क्या रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू डूइंग FA BA MA, सारा कुछ करने के बाद आप बन क्या रहे हैं? डॉक्टर बन गया ना आप? चलिए, ये डॉक्टर है, क्या फायदा इसका? ये मैं कैसे डॉक्टर हूं जिसका मुआशरे को कोई फायदा नहीं? मैं क्या बनाऊं? मैंने 2 महीने 3 महीने ELC में कोर्स किया, मैं बन क्या रहा हूं? मुझे आ क्या रहा है? मैं FA BA कर चुका हूं, मुझे आ क्या रहा है? मैं बन क्या रहा हूं? क्या मुझे आग में डाल के कुंदन बनाया जा रहा है? बोले। अगर नहीं बनाया जा रहा, देन माई टीचर इज वेस्टिंग माई टाइम एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम एज वेल। यार तू 4 साल को इतलाए ने तू बनाया कि वो और बात है, तू की बना है। मैंने MPhil कर लिया है, मैंने एक पर्सनालिटी बनाई है, वो बोलती है। खसमानु खाए डिग्री मेरी, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ जाया हो गया। वो कागज गया तो मैं भी गया? नहीं, वो कागज तो गया लेकिन मैं जिंदा हूं, मुझ में रूह जिंदा है, मुझ में स्किल्स आई हैं। अब अपने आप से क्या पूछेंगे? व्हाट एम आई बिकमिंग? मैं हेल्थ क्लब जा रहा हूं, 2 महीने हो गए हैं, मेरा तो कोई मसल डेवलप ही नहीं हुआ। तो क्लब वालों को दे के आओ, उनको 2-2 4-4 साल हो गए आपको अंग्रेजी सीखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज में। आई है अंग्रेजी? चुप हो। उर्दू आई है? नहीं आई। अरबी आई है? क्या है? इस्लामियात आ गई है? कितने साल पढ़ी है इस्लामियात? 12-14 साल पढ़ी है ना? क्या जानते हैं इस्लामियत के बारे में? सोशल स्टडीज क्या होता है?
कितने दरिया हैं पाकिस्तान में? तो बाकी ਜਿਹੜੇ दरिया ने वो दरिया नहीं है, वो मशहूर 5 हैं, बाकी जो हैं हमें उसका भी नहीं पता है। सबसे बड़ा सूबा कितना है मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान के सूबे 4 ने के 5 ने। आपको पता है? तो क्या पढ़ते हो? क्योंकि हमने अपने आप से पूछा ही नहीं है कि हमने पैसे दिए, हम पे गधे की तरह किताबें ला दी गई, हमें ये दे क्या रहा है? ये पंखा कुछ दे रहा है? इससे आपकी गर्मी ठंडी हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर नहीं दे रहा तो आप तो इसको उतार के जहां से लिया उसके मुंह पे नहीं मारोगे जाके, ये मारोगे, लेकिन पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करता है। आप अपने आप से पूछिए, आर यू ग्रोइंग? आप में डेवलपमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? घर जाके पूछना है। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी एन आइकॉन और नॉट? आप इस दुनिया में, इस शहर में, इस सोसाइटी में आइकॉन बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? डू यू वांट टू बी एन आइकॉन इन सोसाइटी? बनना चाहते हो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी? इंशाल्लाह। आस्क योरसेल्फ whether you are going to make a positive difference in society or not. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी वजह से, काशिफ की वजह से सोसाइटी में कोई डिफरेंस आया है कि नहीं आया? कौन सा डिफरेंस? पॉजिटिव डिफरेंस। डिफरेंस तो आता है। सोसाइटी दिन ब दिन गंदी होती जा रही है, बुराइयां फैलती जा रही हैं, मेरी वजह से फैलती जा रही हैं, लेकिन is it acceptable? No. Ask yourself whether you are going to have some positive differences in society or not. क्या मैं इस धरती पे बोझ तो नहीं हूं? क्या मेरी वजह से सोसाइटी में बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो ये आपकी सक्सेस है। Do you have a role model? आप ये देखें कि कोई ऐसा रोल मॉडल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट एग्जाम्पल, और उसके बाद दुनिया में जो ताज़ा एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं आप उनको भी साथ लेके चलिए। ओके? एंड आफ्टर दैट यू सी वेदर यू आर एबल टू मैनेज योर डे और नॉट। अब आपने देखना है कि आप अपने दिन को मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क, स्टडी, स्लीप एटसेट्रा? डू यू हैव बैलेंस इन लाइफ? अगर है तो आप कहेंगे यस, माई लाइफ इज बैलेंस्ड एंड आई एम हैप्पी। बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है। ये बाजियाँ घर में हंडियाँ पकाती हो गई। बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ एवरीथिंग और द इंग्रेडिएंट्स दैट यू कुक। आंटी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, अच्छी कुक होंगी इंशाल्लाह। आपको कभी लगता है कि नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया है? और जब ये हंडिया में नमक कम या ज़्यादा हो तो हंडिया की हालत क्या होती है बेचारी? कोई कह रहे हैं मुन्नू ना कोई खाए, मुन्नू ना कोई खाए। हाँ जी, नमक ज़्यादा भी हो जाए तो फिर वो कह रही होती है परा परा मुन्नू ना कोई खाए, मर्चा बढ़िया ने, नमक बड़ा। और जब प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ हंडिया बन के प्रेजेंटेशन होके साथ आए तो पहले जो है आपके मुंह में से पानी निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो बनी इतनी खूबसूरती से होती है, उसमें खुशबुएं इतनी प्यारी आ रही होती हैं, उसका डिस्प्ले इतना अच्छा होता है। पहला निवाला लेने का मतलब है कि मैं सारी खा जाऊं। क्या आपकी लाइफ बैलेंस्ड है? एवरीथिंग घर जाके बैलेंस कीजिए। एंड आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव अ बिग वाई इन माई लाइफ। अब ये सारी चीज़ों के बाद आपके अंदर का जो वाय है वो निकल आना चाहिए बाहर, जो कि अब आप घर जाके आपको झंझोड़ेगा और आपकी सारी प्लानिंग दोबारा से करवाएगा इंशाल्लाह। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं आपके जहन में तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम कुछ वीडियोस की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड वी लर्न? क्या सीखा हमने? We have to learn, we have learned to ignite. Ignite क्या होता है? जलाना। Our challenges, हमने उसको स्टार्ट किया है। अपनी ज़िंदगी में वाय हमने पैदा किया है।
आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ। Excuse me, sir. How can we get our goal in our life? Can we take suggestions from our elders or someone else? बिल्कुल, सजेशन के बगैर हम नहीं चल सकते बेटा। ये मैंने सारी आपको प्लानिंग दी है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका प्रिंट आप लोगों को मिल जाए। इसमें सारा सीक्वेंस है, उसके मुताबिक चलिए इंशाल्लाह। ठीक है, विदाउट गाइडेंस वी आर नथिंग। अकेले नहीं चलना है। आप शाय फील करें, नो प्रॉब्लम। अब हम ये देखते हैं वीडियो में कि क्या करें तो क्या होगा। मैं भूल गया हूँ, हमारे कुछ डस्का से कुछ मेहमान, कुछ स्टूडेंट्स आई हुई हैं जिन्होंने ये सारी हैंड राइटिंग की पेस्टिंग की थी बोर्ड के ऊपर। वो शायद आप हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। सब लोगों की मौजूदगी में हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। यू डिड अ ग्रेट जॉब, इट वाज वंडरफुल। डस्का से पूरा दिन उन्होंने लगा के उसकी हाथ से इन्होंने बनाया है, उसे ड्रॉ किया है, फिर उसकी कटिंग की है, फिर पेस्टिंग की है। सी हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। और वो कितना माइन्यूट कटिंग थी हाथ की। इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच इंडीड। कोई सही तालियों की आवाज़ नहीं आई। मुझे सर इसकी आउटपुट दीजिए। किसी का शिकार किया हुआ नहीं खाता। अब एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वही शोले ने उसकी ज़िंदगी को बदला था, विनर उसको करवाया था। आपने तो शायद नहीं सुना होगा, ये सुना भी है। बॉक्सिंग में जो नंबर 1 है या था, उसका क्या नाम है? माइक टायसन। आजकल शायद वो रिटायर हो गया है। उसने शायद किसी का कान भी खा लिया था लड़ाई करते करते। उसको किसी बंदे ने शिकस्त दी थी। और वो कैसे दी थी, वो मुझे जब वीडियो आप देखेंगे, लास्ट वीडियो है, फिर हमें छुट्टी हो जाएगी। और फिर आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने माइक टायसन को भी हरा दिया, और वो आप में क्यों नहीं। Very, very few people and very, very few organizations can clearly state why they do what they do. And by why, I don't mean to make money. That's a result. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief? Why does your company exist? Why did you get out of bed this morning? And why should anyone care? What is your why? Why'd you even get out of the bed this morning? What's your why? Why do you want to do it? What is your gift? Are you an artist? Are you the talent that can produce something no one else produces as a skill or a product or a service or some impact? Well, life is worth living when you find purpose. If y'all gonna be great on that field, you gotta have a why. You gotta have a reason for why you do what you do. You can write everything down if you want to. Be brave enough to write every one of your goals down. But I'm going to tell you something. Life's going to hit you in your mouth, and you got to do me a huge favor. Your why has to be greater than that knockdown. And I love it. Buster Douglas got knocked out. Nobody ever got knocked out by Mike Tyson and ever got back up. It was almost a 10 count. He was stumbling. They were 4, 3, 2, and 1, and ding, 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 saved by the bell. And he goes to his corner. The whole world is like, yep, that's it. Once he comes back out, that's it. Mike's gonna just hammer him. And exactly that. Mike Tyson came out like, I got him. I got this kid up against the rope. Listen to me, many of you right now, life's got you up against the rope. You can't give up. You can't give in. Listen to me, if it was easy, everybody would do it. And if life's got you backed up, I need you to do what Buster Douglas did. Buster Douglas started fighting back. The world was shocked. Goliath has been knocked down. What happened? And they went to Buster Douglas and they asked Buster Douglas simply like, what happened? And Buster Douglas said, listen to me, it's real simple. Before my mother died, she told the whole world that I was going to beat Mike Tyson. And 2 days before the fight, my mother died. Buster Douglas had a decision to make. When his mother died, he could die with his mother, or he made a decision, I can wake up and I can live for mom. And he knocked Mike Tyson out simply because his why was greater than that punch. His why was greater than defeat. His why was greater than his trial and his tribulation. And I'm telling you, if you don't know what your why is and your why isn't strong, you're going to get knocked out every single day. If you want to live a life of success, a life of complete success, happiness and fulfillment,
you must find your purpose. You see, if you don't know what your purpose is, if you don't know what drives you, what inspires you, then you have no reason to improve your life. How can you improve your life if you have no reason to improve it? Why do you do what you do? Why do you do what you do? What's the reason? Why do you exist? Do you know what it takes to be great? Are you willing to go that extra mile? I tell you time and time again, you will get tired. But if you have a why, we'll give you that extra strength, that extra foot you need, that extra hour you need, the courage. Why are you different from everyone else who's trying to do the same thing you're doing? What makes you stand out? Why are you so important? Find your why. Your why will pull you up when you feel like you don't have the strength to get up anymore. Your why will keep you fighting when everyone else thinks you are out for the count. Why? Who are you fighting for? What drives you? Your purpose is that one thing that lights you up. It's the one thing that will get you up early. That one thing. When you're doing it, time stops. Your purpose may be something you don't want. It may be seeing someone in your past and thinking, no matter what, I will ensure I never end up like that. Your purpose is always something that lights a fire in you. I will do this no matter what. My family is counting on me. My friends are counting on me. I am counting on me. And you may even think you know who you are because you've been living a certain way, but I'll tell you how you'll know. You'll feel euphoric, you'll feel strong, you'll feel unlimited, you'll feel free. And most people, they're stating what they hope will come together, and if it doesn't happen, then they're disappointed, but they're not too disappointed because they're not too vested. I'm suggesting that you set aside time every day, if you're not doing it already, reading 10 to 15 pages of something positive every day, listening to audio programs, investing in yourself to expand your mind for what is possible. And then once you find out what you want, spend the rest of your natural life waking up and going after it. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. Winners win and losers lose. I love my life. Do you want to know why? Because I've seen the purpose. Because I have no arms, no legs, you're all listening to what I have to say. See, again, the secret's going to be this. What is an extraordinary life on your terms today? Getting clear about that. At this stage of life, where you are, where you want to go. It's about how can I find the gift I have to give the world? And how can I give it in a way that truly adds value? Not, I think adds value, but the people receiving it, they vote with their feet and say, this truly makes a difference in my life. What I'm suggesting that you operate out of a larger vision of yourself. I want you to see yourself doing what you want to do, experiencing what you want to experience, having what you want to have, doing what it is that gives your life some meaning and value. Most people are not really entrepreneurs, but they think that's what they should be. They think that's the sexy thing, that's the most attractive thing, that's the best answer. And what I say to you is, you got to separate the vehicle from the outcome. What is it that's going to truly fulfill you? What is it that's going to give you that extraordinary life? What's going to make things magnificent on your terms, not somebody else's terms, not your father, your mother, your background? What is that really? Separate the vehicle, because there's many ways to get that vehicle. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? The major key to your reaching your dream, your living up to your greatness, your making your contribution is you. I believe all of us have some purpose for being here.
The problem with some of y'all, the reason why you don't give 120% every doggone time you get on the field, because you ain't got a why for what you do. As I talked with my friends, I made an astounding discovery. 80% of them were unhappy with their lives. The most important element is for you to be able to do this, to be able to establish, most importantly, where you really are in your life today. Where are you? And where do you really want to go? What's going to create this extraordinary life? Because some of you right now, if you continue the direction you're going, are going to be successful and unfulfilled, unhappy, and stressed. See, the last chapter to your life has not been written yet, and it doesn't matter about what happened yesterday. It doesn't matter about the things that you've done that you feel guilty about. If you wouldn't do it today, you're convicting an innocent person. The first step is you got to have a vision for what it is you really, truly want. A vision is about what you're here to create. A vision that really works is one that excites you. If you say, well, my resolution, my goal, my outcome for this month, this week, this year is to lose X number of pounds, that's okay, but it's not very compelling. It has to be a compelling vision. It's got to have something that has the power to pull you, not something you have to push yourself to do. Those are two different kinds of motivation. Push requires willpower, and willpower never lasts. What will last is pull. Having something so exciting, so attractive, something you desire so much that you have a hard time going to sleep at night and you get so up early in the morning to rock it and take it to the next level. You have greatness within you. You have the ability to do more than you can ever begin to imagine. And so what I'm suggesting that you do is to stretch yourself, that you constantly look for ways as an entrepreneur, how can you begin to set yourself apart from the competition? What is it that you can do that can make you stand out? Are you incredibly good at management? You really know how to manage or lead people? Are you an extraordinary entrepreneur that can take that gigantic gut load of risk and can create the vision and attract the talent that you need and the managers and leaders? You may have all three abilities, but which one really fulfills you the most? That you've got to find something that you love and that you master that. Henry David Thoreau said, do not go where the path may lead, but go where there's no path and leave a trail. My mom wanted me to be a truck driver because that would mean I would make $24,000 a year if I went to Truck Masters, and that would be twice what my father made. And she thought that would happen, but something inside of me said, I don't want to drive a truck. There's something else that matters more to me, and I decided I was not going to go for money instead of passion. And the rewards have been pretty amazingly better than being a truck driver. It's not bad being a truck driver, it's just not what I was after. And I look back, and one of the things that helped me was my original teacher, Jim Rohn, who was a personal development speaker I went to hear when I was 17. He said something the first time I heard him, and he said, you know, it's really simple. If you want life to change, you got to change. If you want life to be better, you've got to get better. It's the only way it happens. And luck will show up for people and it'll leave them. But if you're constantly improving who you are and what you give, game over. See if you can find some ways to multiply your value to the marketplace. And he said your income will immediately start to change. See, if you go through life holding back, and most of us do, most of us, if we ask ourselves, have we done all we can do? Most of us will have to answer, no, we haven't. We've been holding back. We have ideas that we don't act on, things we want to do. We're afraid to take chances. We go through life trying to seek security and not coming outside of our comfort zone. And we take most of our stuff with us to the grave. Up until then, I was hoping that the economy would change. I was hoping that my company would change. I was hoping that my paycheck would change. I was hoping that circumstances outside would change. And then here's what I found out. It isn't going to change. So then my question was, if it isn't going to change, how will my life ever change? And here's what my teacher taught me. When you change, everything will change for you. And I'm saying that the fact that you're still here, that you're still breathing, you've got some more work.
And you owe it to yourself. You owe it to yourself. So when you get up in the morning, that you can look yourself in the face and say, hey, I'm living my life on my terms. Change your question, change your life. When it comes to planning your life, I want to get you to learn to ask 3 questions now. The question you want to ask yourself is, what do I want? What's my outcome? What's my result? The word RPM, the first one, is to get you focused on the target. The target is not the activity. The activity can change. It's what's the result I'm after. If you know exactly what it is you really want, what you desire, what you're really after, clarity is power. The more clear you are and specifically what you want, the faster your brain can get you there. But if you're generally saying things like, what do I want? Well, I want more money. Fine, here's $1, get out of here. Whether you get the outcome or not, whether you get that result, will be based first, do you have clarity? And the second thing is, whether you got enough emotional juice to keep going after it when things don't work out. Did you achieve the outcome? Yeah, when you're that general, you think you're not getting your goal, you are. The way you language your goal, the way you think about it, you're receiving it. I want to feel a bit better. I want to lose some weight. Fine, you lost a pound, you're done. When you get better, everything will get better for you. That's where I picked up that phrase, for things to change, you've got to change. You don't have to change the marketplace. You don't have to change the marketing plan. You don't have to change the economy. You don't have to change countries. You don't have to change circumstances out there. All you've got to do is look within and see if you can change yourself for the better. And as you change, things will start to change for you. What's the result I'm after? What's the ultimate result? What do I want out of this week, out of this thing, out of my business, out of my life, for my body? Don't concern yourself too much with how you're going to achieve your goal. Leave that completely to a power greater than yourself. All you have to do is know where you're going. The answers will come to you of their own accord. And here's my best advice. Welcome all experiences. You never know which one is going to turn everything on. Are there going to be some moments when you want to give up? Yes. Will there be some moments when it's going to seem like it's impossible? The pain that you're experiencing, the disappointment that you're experiencing, that you're going to say, it's not worth it? Yes, that's going to be right there for you. It's going to be in your face, telling you to go back. Unchain your mind from the imprisonment of fear. Unchain your mind. It's been encaged with doubt. Unchain your mind. Loose yourself. Let yourself free from the binds of average, from the binds of normal. Loose yourself from intimidation. Let yourself free. Let your mind go. Shift your focus. Your focus, your intensity, your drive, your everything should be put into the amount of effort that you are going to put into that attempt. You cannot fail. You cannot fail if you give 100% of your effort. When we think about changing our lives, usually that means changing your behaviors, retraining yourself, getting new habits, going out and trying them out and changing your life. This is about changing your thoughts, and then your life will change. Change your thoughts, change your life. Benjamin Disraeli said, nothing can resist a human will that will stake its existence on its purpose. Shortly put, I'll do it or die. Know that all you have to do is hold your goal before you. Everything else will take care of itself. And I can tell you that it doesn't make any difference what age you are, whether you're a teenager watching this, or whether you're someone in your 60s, 70s, 80s, or anywhere along the way, you can make that change. Every thought, every feeling, every emotion you experience in this lifetime is shaped by beliefs and values. All of your life is controlled by decisions you make.
decisions about what to believe, decisions about what to feel, decisions about what to do. And most of us are on automatic pilot, letting the world trigger us instead of taking back control of our life. And when you do that, just think of it this way. Anything you want to change, you want to change your body, you want to change your career, your business, your relationship. What to do requires the right strategy. You want to lose weight and keep it off, you can't obviously just throw your pendulum and go on some silly diet. You got to know the things that are going to give you lasting results. So we teach those strategies. But some people even know what to do, but they don't do it. And why are we able to get people to do it, to follow through? Because 80% of success in anything, my friends, is psychology, and 20% is the mechanics. What that means is there's how to do stuff and there's why to do stuff. How to do it is not that complex. And if you really learn from somebody who knows those refined distinctions, they can show you those tipping points, those things you can do where in the least amount of time you get the biggest result. Kashif Mahmood, ELC Sialkot, Pakistan. Do you know the spark, the beginning, or not? Behind your FA or BA, do you have the spark? Behind your FA, BA or MA or MPhil, do you have the spark? What is that why? When you have why inside, and what do you mean by why? Do you have the why that wakes you up? क्या आपके पास वो वाई है जो आपको फेसबुक की तरफ नहीं जाने देता है? क्या आपके पास वो वाई है जो किसी से बात नहीं करने देता है? उस माँ को नींद आ सकती है जब तक उसका बच्चा उसके पास ना आए? क्या आपके चैलेंजेस आपको सोने देते हैं? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, you think that you are getting success? Why are you using internet? To get entertained? There is no particular entertainment in students' life. You need to work hard and hard and hard. कि मैं कैसे डॉक्टर हूँ जिसका मुआशरे को कोई फायदा नहीं है? मैं क्या बनाऊँ? मैंने 2 महीने 3 महीने ELC में कोर्स किया, मैं बन क्या रहा हूँ? मुझे आ क्या रहा है? मैं FA BA कर चुका हूँ, मुझे आ क्या रहा है? मैं बन क्या रहा हूँ? क्या मुझे आग में डाल के कुंदन बनाया जा रहा है? यार तू 4 साल को इतलायन है, तू बनाया कि वो और बात है, तू की बना। मैंने MPhil कर लिया है, मैंने एक पर्सनालिटी बनाई है, वो बोलती है। खसमानु खाए डिग्री मेरी, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ ज़ाया हो गया। वो कागज गया तो मैं भी गया। 2-2 4-4 साल हो गए आपको अंग्रेजी सीखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज में। आइए अंग्रेजी। As you look at yourself as a business operator, as you look at yourself as an entrepreneur, as you look at yourself as a person that want to make a mark with your life, that want to leave a legacy, you've got to be hungry. It's better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. You want to find people who master that because success leaves clues. And that's the same thing I'm suggesting to you. Whatever area that you want to go in it's finances, in business, insurance industry, whatever area that you're interested in, find the people who are mastering that and follow their example. Watch your relationships. They're nourishing relationships and they're toxic relationships. Nourishing relationships, they bring the best out of you. They inspire you. Toxic relationships, they drain you. People that are hungry are willing to do the things today others won't do in order to have the things tomorrow others won't have. People that are hungry believe, always strive to get on top in life because it's the bottom that's overcrowded. People that are hungry know if you want to be successful, you must be willing to do the things today others won't do in order to have the things tomorrow others won't have. If you do what is easy, your life will be hard. Complain, point at your circumstances, give up your power, blame the government, blame the economy. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard,
your life will be easy. It's hard to make a radical change in your behavior. It's hard to take ownership. It's hard to swallow the bitter pill that wherever you find yourself, at some point in time, you made an appointment to be there. That's hard. It's hard. If you do what is easy, your life will be hard. If you do what is hard, your life will be easy. You must know what you're going after. You must know what you are going after. You can't live your life meandering around hoping you hit something, and whatever you hit, you say, that's what I was aiming at. You have to have a specific target in mind. Most people don't succeed at getting what they're going after because they don't take the time to research what they're going after. They ask for things and then see if they want them. But you have to be careful about that, because if you ask for something, you might get it. You need to be sure that that's what you want to see happen in your life. Know what you're going after. So before you go after it, ask God, is it yours? Because if it's not yours, and the only reason you're going after it is because it looked good on somebody else, you begin to covet what belongs to somebody else. Most people want everything they see somebody else with. They buy clothes that don't look good on them. They wear hairstyles that don't look good on them. They buy houses they can't afford because they're trying to keep up with somebody else. But if you really want to be a winner, if you really want to come off as successful, if you really want to be bright, only go after things that are meant for you to have. It will make you look successful. And what makes you look bright is when you pick your battles. There are some things that you don't fight because that's not your fight. You don't get into that thing. You don't pick those battles. You don't covet what you see somebody else fight down because they're anointed to fight that. They can do that. You might not be gifted to fight that area, and you don't want to covet somebody else's battle or covet somebody else's success. Covet, and the other word I want you to think about is the word envy, because envy is the attitude that you have about other people's success. And the quickest way to stop being envious of other people's success is to know that everything in your life is preparing you for that thing, that there are in your life defining moments. This is a critical issue. There are in your life defining moments, moments that if you handle properly, they are pivotal points that change your life for a lifetime. It is at these moments that if you know what you're going after, everything that you went through before is justified in preparing you for these defining moments. Know what you're going after. Be clear about your direction. Don't wake up in the morning and see if something's going to happen. Wake up in the morning to make something happen. Get up out of the bed with an agenda. Oh, I lost half of you on that. Because you're just so happy that you got up. You don't care what does happen. You say, well, at least I'm up. But people who get up like that, nothing does happen. And the days turn to weeks. And the weeks turn to months. And the months turn to years. Years of mediocrity is what causes people to be bitter. If you want to get around bitter and complaining people, get around people who are not seeing much activity. They're bitter, they're complaining, they're cynical, and they're jealous because nothing is happening. If you want to get around less gossip and less jealousy, get around successful, busy people. Because busy people don't have time to care what's going on in your life. I have no need to investigate what's going on in your life. I have so much going on in my own life that I'm not interested in what I heard that they said that you thought, that if I thought what you said that I didn't mean if you heard it. The only people who have time for that is people who are not doing anything. And they watch your life like it's a soap opera because they're living their life vicariously through you. What's going on in your life intrigues them because nothing is going on in their life. And if you want to stop that from happening to you, wake up in the bed and know what you're going after. Get up out of the bed with an agenda. When you have an agenda, you don't spend time worrying about how you feel because it doesn't make any difference how you feel. You woke up with something to do. Wash your face. Wash your face is a significant issue because it means literally don't let your past affect your present. Wash your face means wash everything off you that you collected along your journey and prepare yourself for where you're going. Wash your past off of you so that it doesn't pollute your present. You'd be surprised at the people who have ruined where they are with where they came from.
You can sit across the table to interview them, and when you start interviewing them, they start talking about what they went through and what they went through on the last job. They just wasn't ready for me, and they just didn't understand my gifting and the person of my caliber. And after a while, you can see bitterness. And the whole problem is, regardless of whether they went through a bad experience or not, the whole problem is they've never washed their face. Wash it off you. You can't go forward until you wash the past off you. I don't care how long it takes. If it takes laying on the altar, if it takes 6 months, if it takes 6 years, you cannot go forward until you wash your face. You're not ready for Boaz until you wash your face. You got too much stuff on you from yesterday. You must wash your face. Clinging issues from the past, residue that we can readily detect. I shouldn't be able to look at you and see your past on your face. It means you didn't wash your face. It is possible to be delivered from something and still not wash the effects of it out of your lifestyle. You should be surprised at the people who can't figure out why their life is being polluted. They've actually been delivered. They've actually gone on in their life, but they fail to wash from their face where they came from, and they look like where they were, and so they're still penalized as if they were where they were. Even though they've come up higher, they didn't wash their face. You got to wash your past off of you, or you will forfeit your opportunity to go forward. And you'll be angry at people and upset at people, but people wouldn't be talking about you if you would just wash your face. But you haven't washed your face. You had the academics, you had the intellect, you had the ability, you had the school loan, you had the tenacity, you did everything. You got the degree. You're in the upper echelon. You're moving amongst certain people of influence and affluence, but you're not able to handle it because you've never washed your face. You might as well be in the back of a trailer over in the project somewhere, spitting watermelon seeds over your grandmama's back porch, because for all of your training and education, you never did wash your face and prepare yourself for where you are now. And you're trying to change the whole system to fit you when you have to fit the situation. Everything's not going to change for you. You've got to anoint your face, which basically means put on a fresh attitude. Makeup does stuff. It brightened your countenance. It gave you a fresh, clean, glowing look. And that's what the anointing does. It gives you a glowing look. It gives you an effervescence. It gives you a sense of excitement. It gives you a positive attitude where you walked into a room glowing. Understand, this is something you have to put on. This is not you. You put it on. Our generation has the philosophy, keeping it real. And we think keeping it real means expressing everything you think. But keeping it real will keep you broke. It will keep you unemployed. It will keep you divorced, because people really cannot handle that. They don't want that. What they want from you is to come to work with your face glowing and walk up and say, "Good morning, may I help you today?" Because if you don't start changing your attitude, you will miss your altitude. Change your garments. Changing your garments means to prepare for something that hasn't even happened yet. And if you do this, you will look ridiculous where you are, because you are prepared for where you're going. Though you're not where you're going yet, you're already prepared for something that hadn't happened yet. Well, why would you do that? Because when it does happen, you won't have a chance to get ready. You're going to have to be ready when it does happen. Am I talking to anybody? And the other thing you have to understand is anytime you get ready for something that hadn't happened yet, you feel out of place with what is happening. You need to prepare in the direction that you're going in. I ought to be able to look at your preparation and see your destination. Your destination needs to be on you right now. Understand, my brothers and sisters, that when you do put it on, there's going to be a certain amount of peer pressure where people start treating you differently where you are because you're dressed for where you're going. But let them stare. It's worth them staring to be prepared. It hadn't happened yet, but I'm dressed for it. I'm ready for it. I'm learning about it. I'm ready to do it. I'm ready to walk into it. I'm ready to receive it. I'm practicing on being blessed. I'm getting ready for it right now. When it does happen, I'll already have my stuff.
when it does happen, I'll already be in place. You ought to be ready right now for things that your eyes haven't seen and your ears haven't heard. You ought to be so ready that people who knew you before ought to be confused by what you're doing right now. You have to own your own happiness. Take it away from other people demanding that they make you happy. Your kids are not going to make you happy. Your spouse is not going to make you happy. A big house is not going to make you happy. Own your own happiness and be responsible for doing those things that bring joy into your own heart, independently of life and people and money and all of that stuff. Right. It doesn't necessarily give you a happiness. You have to take responsibility of that peace and that joy that lives inside of your heart and not inside of your stuff. Enjoy the journey, not the destination. Courage, strength, leadership, bravery. Sheep follow the leader. They follow the herd. They don't know where they are going. Many times they are led to the slaughterhouse, but they keep following. They don't lead. They don't use their mind. A lion leads. It's about having the courage to stand and fight for your life, having the strength to go bravely in your own direction, even if others walk away. You tread your own path. Only you know what's best for you. Only you know what path to take. Only you know your courage, your strength, your heart. Everyone has the heart of the lion inside of them. Let it out. Let it scream out of you. Like the lion, unleash the beast in you. Attitude is what you think, what you do, and what you feel about yourself. Attitude is everything in life. Guess why? Whether you rise or fall, everything is based upon the attitude that you showed up at that moment. Your attitude determines your altitude. Listening carefully. I've been through tough time. I've experienced it, and I want you to know that it wasn't my money that brought me this far. It was my attitude towards life. It was my attitude to keep going when the going gets tough. That is the lion attitude I'm talking about. The question is, what is your attitude towards life? What do you think of yourself as I'm talking to you now? Do you think of yourself as how God thinks of you? Or you think of yourself as how friends and family members think of you? You need the lion attitude. The attitude to take charge of your destiny. You need the lion attitude that says, I can. You need the lion attitude. The attitude that says, I will, because I'm bold enough to fight. You need the lion attitude if you are standing in for greatness. Real lions, they are hungry when the time comes for their mission. Lions are not followers. They are leaders who lead the rest of the animals. Become a lion. Be fearless. Don't talk. Walk the talk. Real lions, they demonstrate who they are. A lion does not seek respect. They command respect and authority because they know they should be respected. Be a lion. A sheep follows the leader. A lion leads. It's about having the courage to stand and fight for your life. Having the strength to go your own direction, even if no one believes in you. Follow your heart. Only you know what is best for you. Only you know the path to take. You have the heart of a lion inside you. Let it out. Don't fit in. Stand out and use your gift. The lion is certain. There are no maybes with the lion. This is my decision, and I will attack until the outcome is mine. No one will push me around. No one will tell me where to go or what to do. If I want something, I will go after it with everything I have inside me. The sheep is not certain. That is why the sheep follows the herd,
not knowing where they are going, not caring, just drifting through life, being pulled and prodded, being sheared from head to toe until there is nothing left to give. And that is what I see in many of you. Life, the world, and society is shredding you of your very self. Head to toe, you lose your own unique footprint. You become what others want you to see, not what you want to be. Don't let anyone push you around. Be like a lion. Roar so loud with your own spirit that no one will doubt you ever again. No one will question your goals. No one will dare challenge you again, because you certainly will shine through like the lion. When you wake up every morning, what drives you? If you want to live a life of success, a life of complete success, happiness and fulfillment, you must find your purpose. You see, if you don't know what your purpose is, if you don't know what drives you, what inspires you, then you have no reason to improve your life. How can you improve your life if you have no reason to improve it? Why do you do what you do? Why do you do what you do? What's the reason? Why do you exist? Do you know what it takes to be great? Are you willing to go the extra mile? I tell you time and time again, you will get tired. But if you have a why, we'll give you that extra strength, that extra foot you need, that extra hour you need, the courage. Why are you different from everyone else who's trying to do the same thing you're doing? What makes you stand out? Why are you so important? Find your why. Your why will pull you up when you feel like you don't have the strength to get up anymore. Your why will keep you fighting when everyone else thinks you are out for the count. Why? Who are you fighting for? What drives you? Is your purpose your family? Is it to prove the doubters wrong? Is it to prove yourself right? What is your purpose? Write down your purpose. Carry it with you everywhere. Feel it deep and promise yourself every day you will live your purpose with zero excuses. Somebody's waiting for you to mess up. Somebody's waiting for you to give up. Someone is waiting for you to fall. So when you're challenged by life, what are you gonna do? When you feel like you're at your lowest point in life, will you throw in the towel? Or will you make the moves to be successful? Don't look back. Just remember where you came from and let that drive push you to go forward. It's not always gonna be an easy road. And when you reach success, you won't take it for granted. You'll cherish those moments you had to go through, those moments you were without. And when you fall down, get back up, dust yourself off. You need to find something that drives you, something that no matter what happens, this part of you does not change. This drive in you does not change. This purpose never dies. No matter how many times life knocks you down, your purpose pulls you up every time. This is the reason I will fight for my dreams. This is the reason I will not take no for an answer. When it hurts, keep going. Those cloudy days, those storms, telling you to keep going. Those times in your life when you can't see how you're gonna make it. Some things you can't change. You just have to live with. But if you do have a choice, make the right choice. Your purpose is that one thing that lights you up. It's the one thing that will get you up early. That one thing. When you're doing it, time stops. Your purpose may be something you don't want. It may be seeing someone in your past and thinking, no matter what, I will ensure I never end up like that.
Your purpose is always something that lights a fire in you. I will do this no matter what. My family is counting on me. My friends are counting on me. I am counting on me. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullah. Kashif Mahmood, ELC Sialkot, Pakistan. Do you know the spark, the beginning, or not? Behind your FA or BA, do you have the spark? Behind your FA, BA or MA or MPhil, do you have the spark? What is that why? When you have why inside, and what do you mean by why? Do you have the why that wakes you up? क्या आपके पास वो वाई है जो आपको फेसबुक की तरफ नहीं जाने देता है? क्या आपके पास वो वाई है जो किसी से बात नहीं करने देता है? उस माँ को नींद आ सकती है जब तक उसका बच्चा उसके पास ना आए? क्या आपके चैलेंजेस आपको सोने देते हैं? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, you think that you are getting success? Why are you using internet? To get entertained? There is no particular entertainment in students' life. You need to work hard and hard and hard. कि मैं कैसे डॉक्टर हूँ जिसका मुआशरे को कोई फायदा नहीं है? मैं क्या बनाऊँ? मैंने 2 महीने 3 महीने ELC में कोर्स किया, मैं बन क्या रहा हूँ? मुझे आ क्या रहा है? मैं FA BA कर चुका हूँ, मुझे आ क्या रहा है? मैं बन क्या रहा हूँ? क्या मुझे आग में डाल के कुंदन बनाया जा रहा है? यार तू 4 साल को इतलाए ने तू बनाया कि वो और बात है, तू की बना। मैंने MPhil कर लिया है, मैंने एक पर्सनालिटी बनाई है, वो बोलती है। खसमानु खाए डिग्री मेरी, आग लग गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ ज़ाया हो गया। वो कागज गया तो मैं भी गया। 2-2 4-4 साल हो गए आपको अंग्रेजी सीखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज में। आइए अंग्रेजी